जय हो। अब पुनः भोपाल से मैं आप लोगों के साथ आपके लिए होस्ट करने के लिए पुनः समर्पित हूँ। नृत्य कला बैठ चुका है, ठंडा गरम बरसात चल रही है इंदौर में भी और भोपाल में भी। तो मैं आप सबका आयुष समृद्धि प्लेटफॉर्म की ओर से आज इस 701वें पड़ाव पर स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आभार। आज सभी मातृ शक्तियां हमें आशीर्वाद देंगी, क्योंकि मेरा मानना यह है कि वर्ल्ड डांस डे के दिन हमें ये प्रण लेना चाहिए। पहले का आदमी इसलिए सुखी था, गुजरात में कभी भी कुछ भी थोड़ा सा भी कार्यक्रम हो, आदमी वहां गरबा करने लगता है, जेंट्स हो या लेडीज हो। ऐसा हमारे यहाँ ये कला समाज से दूर चली गई और यूनिक स्पेशलिटीज होने लगी। बहुत बहुत आभार। मैं आदरणीय अग्निहोत्री सर से स्वागत भाषण की प्रार्थना की। थैंक यू प्रोफेसर पवन शर्मा जी। नमस्कार सभी को, सभी अतिथि आज के समस्त अतिथियों को, हमारे जो आज के अतिथि हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए, और जो हमारे गेस्ट माने फ्लोर पर जुड़ चुके हैं उनका सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा नमस्कार सर, नमस्कार। जैसे पवन शर्मा जी अभी भूमिका बता रहे थे, तो मैं तो उसमें एक शब्द जोड़ना चाहूंगा कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कल था, और अंतर्राष्ट्रीय जब बात करते हैं तो जीएमटी के हिसाब से कहीं दिन होता है कहीं रात होता है, और उस सबसे भी यह जरूरी है कि दोज हु आर आवर गेस्ट प्लेयर्स, आई शुड से इंस्टेड ऑफ स्पीकर्स, गेस्ट प्लेयर्स आर हियर, तो we means permitted them for a one day rest so that they can make a better rehearsal to present themselves on today. So we are celebrating on 30th instead of 29th. तो आपने अच्छा रियाज कर लिया होगा गले से भी और नृत्य कलाओं से भी। तो we are most eager to hear and to see in what way you are appreciating this nritya kala, the dance activity or dance art itself, in a form of the betterment and one of the best tool for the prevention of health. So in this form, we invite right from, it's our pleasure that our distinguished guests have consented very generously to join today's this webinar on topic Nritya Kala, best creativity for health and peace. So first of all, Professor Amit Datta, she is a great signature of this field. Uday Shankar, Professor of Dance, Ravindra Bharati University. She is a founder, and Ananda Chandrika, and she belongs to Kolkata. Ma'am, बहुत बहुत स्वागत है आपका. In the same continuation, it's my pleasure to extend my heartfelt welcome to Dr. Anuradha Roy. She is principal. She has been principal in Shri Hansavahini Kalyanam and founder of Shri Hansavahini Kalalayam. I'm sorry, and thanks for your correction. Principal Hansavahini Kalalayam, of course, where the Kala take rests, the Alay of Kala, and she is founder of Shri Odavaliyo Kala Parishad, and she is also distinguished national and international classical dancer. It's our pleasure to have her with our platform, and she is also a Doordarshan A-grade dance performer, and she resides there in Kolkata. So we extend our pleasure from IRES platform. Next one, Miss Ramamna Chattopadhyay, and she is also a distinguished CCRT Junior Scholarship holder, upcoming Kathak sensation. It's a great pleasure. We have got a classical variety of Kathak, Kuchipudi, etc. in India. So she is an upcoming Kathak sensation at the state, national, and international level competitions. Wonderful. We are pleased enough to have. Thank you, ma'am. And then, of course, a very lovely person amongst us is our Mrs. Neeru Kaushik, wife of our one of the 50 years old friendship
maintenance person, Dr. Arun Kaushik. She runs a great say center, of course, with the alphabet play school with arts and creations, and she is director of that. भाभी जी आपका स्वागत है हिंदी में हरिद्वार में. And so goes the case with again one of our very close friend, Dr. Rajiv Dikshit's wife, Madam Neeru Dikshit. She is always with us and she has graced our platform so many times. She is professor and head department of Hindi there in DAV PG College, Kanpur. So स्वागत है रेणु जी आपका. And last but not the least, our relative Mrs. नीलम भटनागर. भाभी जी नमस्ते. मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको आज डायरेक्टली अपने इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने का. And it's a pleasure to share with all of you that she had been teaching the dance art itself for last 10 years there in 20 years there in say our Delhi with a great association that is known as Young Men Christian Association, and that is there in Connaught Place area there in New Delhi. And she is our relative, and we came late for her activities and her expertise in the field of dance. She belongs to a great performer group of the classical Indian dance. So welcome भाभी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. और मेरी सीमा नहीं है अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए, क्योंकि आज अपने बिहाइव के प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर कमलजीत जी जुड़े हुए हैं. मैंने आते ही उनको सत श्री अकाल बोला. आपका स्वागत है. और मैं ये जान पा रहा हूँ कि मैं व्यर्थ में अपना समय, आप लोगों की कीमती समय क्यों खराब करूं. तो हमारे पास सुनने को और देखने को बहुत कुछ है. तो इन्हीं आशाओं के साथ में you will all grace the occasion and also our platform, that is IRES, with your all activities and pleasure. And so I again extend my welcome, heartfelt welcome feelings, and we welcome again. And for further communication, we send back this communication program to Professor Pawan Sharma. Thank you. Thank you. Thank you all. Professor Pawan Sharma ji. Thank you very much, sir. Yes. I would like to request Professor Amita ji. आज ये जो बाकी दोनों सितारे हैं, जो स्टार्स हैं हमारे साथ, वो उन्हीं के शिष्य हैं. तो वो गुरुनाम गुरु. Welcome madam. Now stage is yours. 10 minutes for each speaker. Performer. Great, madam. Welcome. Thank you, sir. We were talking about relatives and family. Well, Pawan Bhaiya has become my brother, right? And so has Professor Ognihotri and everyone over here. And I present my two lovely daughters, Anuradha and Shravana. I'm so proud that they will be presenting their deliberations in this webinar together with me. I wish everyone a very happy World Dance Day. Actually, yesterday was World Dance Day. First, let me speak about dance. What do we mean by dance? Well, to me, dance means harmonious movement. सुनाई देता है? सुनाई देता है क्या? Yes, madam. Please continue. Okay. So मैं co-host से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये माइक म्यूट कर दें, जिनके भी खोले. आहूजा जी प्लीज अपना आप अनम्यूट कीजिए, प्लीज अनम्यूट. आपका अनम्यूट कीजिए, माइक म्यूट.
Please unmute yourself. Madam, unmute করতে হবে। Mute হয়ে গেছেন আপনি। Can I be heard now? Can you hear me? हाँ ভালো করে শুনতে পাচ্ছি। Thank you. So I was speaking about dance, and what do we mean by dance? Dance means harmonious movement, and movement is there in this universe, but by dance we generally mean movement of the human body. Movement is intrinsic to life. From the time we are born to the time we die, we are always making some movement. When a child is born, the first movement shows that the child is alive. And when all movement stops, then a person is dead. Now, we do many movements. We walk, we talk, we move around, we dance. But when the movements are in harmony, when they are expressed with beauty, then we say that it is dance. For instance, we often pluck flowers, but when I pluck a beautiful flower and make a beautiful movement, when I consciously make the movement beautiful, that aesthetic quality adds beauty to the movement, and that is dance. In our country, there has been dance for many, many centuries. In fact, it is said that dance is so old that we do not know when it actually started. We talk about the very well-known Sanskrit treatises, the Natya Shastra, the Abhinaya Darpan. And here we have beautiful descriptions of dance, grammar of dance. It is said that the Natya Shastra was written somewhere between 200 BC and 200 AD. There we have detailed descriptions of movements of the whole body, expressions of the face, then expressions of the hands, then how to use every part of the body. Anga, Pratyanga, Upanga. How to use the body in general, how to use the face, the eyebrows, the eyes, the neck, the head, and so on. And studying the Natya Shastra, we are amazed that that type of very high quality dance existed in our country more than 2000 years ago. We are amazed. Then if we study the Abhinaya Darpan, in fact, the entire Abhinaya Darpan is perhaps not with us, some parts are lost, but we have the part in which how to use the body, especially the movements of the hands, the head, the face, all these are described. And we are amazed to think that if this type of grammar could be written at a time, what type of dance must have been performed, and how many centuries it took for that dance to crystallize and come to that high stage. Then if we read the Vishnu Dharmottara Puran, there also we have a description of the various art forms and also of dance. When the king is asking Markandeya that how do I understand Chitrakala? Because they are speaking about various kalas. And by Chitrakala, he means both painting and sculpture. How do I understand Chitrakala? And Markandeya says that first you have to understand Natya. And in order to understand Natya, you have to understand Nritya, because our entire body is being expressed through beauty. In fact, in our country, we have so many forms of dance. Generally, dances are divided into several categories, like tribal dance.
which is performed by various people who are still not under a very sophisticated cultural system, but they also dance with joy. Then we have folk dances, in which various activities of people living in a society, people dealing with agricultural activities are shown. In fact, in folk dances, the harvest dances are the most beautiful because they celebrate the joy of harvest, which is actually the epitome of the agricultural calendar. Then we have classical dances. Classical dances have reached a very high form of sophistication because it has been practiced and polished for generations. The guru teaching the shishya again passing it on to his or her own shishyas. And this has been going on for several generations. So in classical dances, we have a very strong grammatical system, and there are many different types of dance forms and dance presentations as well. In our country, we have classical dances belonging to different regions. Like in North India, we have Kathak. In South India, we have Bharatanatyam. Andhra Pradesh, Kuchipudi, Orissa, Odissi. In Kerala, we have Kathakali, Mohiniyattam. Then in Assam, we have Kshatriya. In Manipur, we have Manipuri dance. And all these dances are classical dances because they have been polished and they have been taught and they have been actually, people have thought about them, they have done research on them, and they have reached a high degree of excellence. Then in modern times, we have neoclassical dances, where people are actually saying that why should we follow one grammatical system only? We will take from various styles, we will take various movements, and then with our own creative powers, we will form our own dances. So we have all these dance forms. Again, dances can be divided into the category of participative and communicative. Participative is when everybody is taking part in the dance, like in tribal dances or in folk dances. And even today, when you go to a party, everybody is dancing. There is no audience as such. As opposed to that, you have the communicative dance, when stories are being told. So you have the artist, and then the artist is communicating to the audience. This art of communication is called abhinaya. Abhinaya, ninayati abhi, I'm taking something across to you. And so the communicative dance forms tells stories, give various ideas, sometimes historical stories, then religious stories, different mythological stories are conveyed. Again, ideas from nature are conveyed. So we have a wide range of dance forms in our country. And in fact, if we think of our country with so many languages and so many people who have come from different regions of the world and who have come and settled in India, each of them have brought their own dances. Again, these dance forms have intermingled with each other. For instance, when from the Middle East, the kings came with their dancers, those dancers intermingled with the Indian dancers, and so our dance style, Kathak, was formed. Then again, in various situations, under various influences, dances are being formed, are changing, and are becoming more and more beautiful. So actually, in our country, I may say that dance is perhaps more than 5,000 years old. But then why was 29th April chosen as the World Dance Day? You might ask why. Yes, that is important because although in our country we have had dance for so many centuries, there have been so many wonderful dancers, there have been so many beautiful treatises, grammar of dance written in Sanskrit and in other languages also. Well, in India, we are philosophers, we are artists.
We believe in aesthetics. We believe in touching each other's heart. But we don't believe in penning down everything. We don't believe in dates. In India, there is a continuity. One era doesn't end. One era merges into the next. And so we don't pinpoint dates and years. But in the Western world, they are excellent at pinpointing years and dates. Now, there is one organization called the CID, which in English is called the International Dance Council. It is a part of UNESCO. And they have brought under one umbrella dancers of from all over the world. In fact, my organization and many, many other organizations are members of CID. Now, CID said that, yes, we have to choose one day, in the day which will be special for dance, in which everybody will dance. Now, you might say, well, I can't dance. Doesn't matter. You don't have to get onto the stage and dance. So we say that if you see dance, if you enjoy dance, then also you're dancing, because your head is swaying, your mind is dancing, and you are enjoying everything. So CID chose 29th April as the World Dance Day because the famous master of modern ballet, Jean-Georges Devers, was born on 29th April 1727. So they chose this day, and from 1982, CID has said that this day will be called the World Dance Day, in which there will be dance performances, dance festivals, people will perform dance, people will see dance, people will write on dance, people will talk about dance. And so this is a special day for dance. That does not mean that we will not dance on other days, but generally dancers are dancing and we have maybe a limited audience. But on the World Dance Day, we are going to make everybody aware of the beauty of dance. I have spoken for a long time, but before ending, I would like to say a few words. I would like to quote from our great poet, Tagore. He says, in Bengali, dance is called both Nritya and also Nach. He says, Nache nache, Rammo tale nache, Topono tara nache, Nodi সমুদ্র nache, Bhakto hridoy nache. The dance is going on incessantly. The sun is dancing, the stars are dancing, the river is dancing. If you think of the waves of the river, that is also dancing. The mountains are swaying, the trees are swaying, and the mind and the heart of the devotee is also dancing. Again, Tagore has described the dance of Shiva. Because in Abhinay Darpan, the first two verses describe the dance of Shiva. Because it is a vision of Shiva as the universal dancer. Angikam bhuvanam yassa vachikam sarva bhangmayam aharya chandra taradi twang nama Satvikam Shiva. Your body is the entire cosmos, that is dancing. Everything that makes a sound are your words. Because we say that, to dance, you have to dress up beautifully. So the stars and the moon and the sun, they are all your ornaments. We pray to you, O great God Shiva. And what does Tagore say? He says, Nritte tomar muktiro roop. Nritte tomar maya. In your dance, we can envisage emancipation, freedom from everything. And again, in your dance, we have the idea of illusion. And he says, Vishwa tonute
Onute Onute. Vishwatonu is the entire cosmos, and Onu is the little atom. So whether we think of the entire cosmos, that is also moving in harmony, and within the little atom also there is harmonious movement. He says, Vishwatonute Onute Onute Kape Vrittero Chaya. So it is not that human beings are dancing. The entire world is dancing. The entire universe is dancing. Nature is dancing. Plants and animals are dancing. And we are trying to reflect that dance. And, when you dance, then you forget everything. You become a part of the movement, the harmonious movement that is there in the universe. And so that is the great therapeutic quality of dance, where we merge into the universe. We become one with the cosmos. Thank you so much. Namaskar. Thank you. Really, you are, Madam, ocean of the knowledge. You are great. Really, really, you are great. Thank you. You are great and we are grateful. Both. Pras Alankar, really. Naman. So now I would like to request Dr. Anuradha Roy ji, Agnihotri sir. Professor Pawan Sharma ji, namaskar. First of all, Madam Professor Amita Dutt ji, the moment you told Pawan Bhaiya, yes, you established the relationship with our IRES. We feel indebted on these words. We have got no words except this, that we feel indebted that this IRES is now belongs to you completely. Professor you are also my Bhaiya. Thank you. Exactly. I am representing the same. Instead, Pawan ji kuch keh paye, Pawan ji kuch, but I felt I am saying equally. This is the Rakhi Bandhan, which is so strong, which made today not only my day, Pawan ji's day, the day of IRES, and we stand for that. It's not only a worldly matter. It's not the words you spoke. It's not if the Pawan Bhaiya will allow me 2 more minutes, can I just say? Let me, ma'am, because मेरे मन से दिमाग से निकल जाएगा ना शब्द, बड़ी मुश्किल में मैं वेट के रखता हूँ. तीसरी चीज, when you started speaking, really my brain told that we have got no business to stop hearing anymore. We are so became interested that please keep on giving such a great knowledge. You talked about the day's importance, how it has been 29th April. You talked about the different type of the, say, dance categorization. You also talked about the difference, and you talked about the Natya Shastra, then Abhinay Shastra, then Chitrakala. And really, it made me very clear that you may be now my guest speakers on these related days also, because we were in shortage of our art day, that drawing day yesterday, before yesterday, and so goes the so many things. And you defined the Avinay. You told that the I just noted down everything. And not only that, when you talked about that moon dances, सन डांसेस, और हमारी माँ गंगा जी के लिए तो कहा गया है, वे तो पृथ्वी पे उतरते हुए अठखेलियां करती उतरती हैं, कभी इस मोड़ से, कभी इस मोड़ से, कभी ये कटान, कभी ये तट. तो वो तो कहते हैं, कहाँ जा रही हो तुम तटनी, सुनती नहीं तनिक मेरी, बता इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो तुम. ऐसे हमारे हरियोत जी ने और किन ने लिखा, मैडम हिंदी वाली मैडम जी बैठी हैं, वो हमको समर्थन करेंगी कि तटनी के लिए, इनके लिए, नदियों के लिए तो कहा ही, वो तो नृत्य करती हुई अपनी पर्वत श्रृंखलाएं भी यही करते हैं, पक्षी उड़ते हैं एक से उससे, होल बॉडी हार्मोनियस मूवमेंट. प्लीज, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने अपने जो प्रोफेसरियल लेवल है उसके द्वारा हम सबको और एक बात मैं बोलने चाहती हूँ. अब आप बोलिए, प्लीज स्वागत है, प्लीज वेलकम मोर. Yes, because we speak about the therapeutic qualities of dance. Anuradha, who will speak after me, will elaborate more on that, because her PhD thesis has to do with dance therapy. But I would just like to tell everybody that when you're feeling tired, when you're feeling sad, try to just dance. You don't have to follow any grammar. Just go round, round, round.
jump, jump, jump. And you will immediately feel that you're feeling happy. The reason for that is that at that time, endorphins are secreted into our bloodstream. And endorphins are called happy hormones. So whenever we do fast movement with joy, which is dance, at that time, we start feeling happy. Then dance also, like when we dance together with each other, then we are connected to each other. And so the body secretes oxytocin, which is a hormone which makes us feel happy and which makes us connect with each other. Then when we are praised for our dance, like Agnihotriji praised me, at that time I was feeling very happy because dopamine was being secreted into my bloodstream. Dopamine is another feel-good hormone. So all these hormones are secreted when we are dancing. That's why we feel very, very happy. And so whether you are dancing in perfection, whether every movement is correct, or whether you're just dancing with joy, whenever you dance, you feel happy. And so everybody must dance. Today, after this session, everybody start dancing. Okay? Thank you. You will feel happy. Thank you very much, madam. I would like to request now Dr. Anuradha. Welcome, Dr. Anuradha. Please open your video. Pavanji, Yes, sir. I have been able to join. Namaskar. Welcome, madam. I just wanted to add one line. I just wanted to add one line both for Mr. Dr. Agnihotri and Pavan Sharma ji is Namaste. Is that Amita ji is like not only an outstanding dancer, she's an outstanding teacher. When I had the opportunity to listen to her for the first time, she's like a pearl sitting on the bottom of the ocean, but her radiance spreads to the rest of the world. She's an outstanding teacher. Now that she has retired from the university, I feel the university is unfortunate that we are losing such teachers, going out because there is no replacement for such outstanding teachers. There may be dancers, there may be more, academic professors, but the quality of teaching that she has, like she could create an interest of dance among anyone who has no experience in dance will start loving dance just because of her talking. She's an outstanding teacher, like that I have seen. Dr. Sakaji, not only this, her address is so magnetic. Now you see my wife has joined with yes. I told you she is like a pearl, deep sitting in the deep ocean, and her radiance reaches to the other corners of the world. Thanks so much. I am always mesmerized when I listen to her, and I appreciate she has all her students today making presentation. Both of them will make us knowledgeable and enrich about dance. So you cannot. I am taking interest. I left some other work to join in advance. My lecture is around 9:30, but I wanted to listen to them. So thank you so much. And I appreciate if we could organize an online dance program that they have, like if we could transfer that online, it would be an outstanding experience for IRS member, because you haven't seen what I have seen, like the kind of dance they perform is outstanding. And you feel proud to be an Indian that we bear such a great heritage. Thank you so much. And it will ward off the tiredness of whole universe. Yes. When everybody will start dancing, it will happen. Everybody. And all your diabetes, cholesterol, heart diseases, all will vanish. And happy hormones will release in a quantity, abundance. Totally agree. Totally. I won't take much of Anuradha's time. I will request her to join now. Thank you so much, madam. It was a pleasure listening to you. Thank you so much. Welcome. Anuradha ji, welcome. Anji. Please unmute. Hello. Yeah, everybody, I'm listening. Voice. Hello. Yes. Hello. Yeah, I can hear her voice. Yeah. Okay.
Yes, very clear. Yes, please continue. Okay. Namaskar all of you. And Guru Pranam, Amita Madam. Today, actually, everything clear about the dance, whole Natya Shastra is a small demonstration, ma'am, express everything. Nothing to do and one thing for my hand actually. So, with Guru Shishya Parampara, Amita Madam and me, and create a new chapter of not only India as well as world also. This research paper, neurocognitive dance therapy. Amita Madam very much help for this subject, and we create so many things about dance and science also. And today is my small topic, and we go for the demonstrate every movement and how they express the emotion. And this is the emotion and associate with rasa. And according to Natya Shastra by Bharata Muni, yatha hasta tatha drishti, yatha drishti tatha manha, tatho manha, yatho mana tatho bhava, yatho bhava tatho rasa. So we express every movement of dance without emotion, the dance called dead dance. Because emotion is very important in the dance. Every movement you can express with emotion is look very beautiful. Just like in Nritya and Natya. So every part include to the emotion, and emotion means rasa. You express yourself, how you very beautifully express yourself. Without emotion, you can't do any movement you can express. So today we so many research about this part. We means there's a Natya Shastra 8 rasa, and according to Nandikeshwara Avina Darpa, there's a 9 rasas. So every rasa we fractal dimension, we do the research fractal dimension EEG. Those things we analyze the how the emotion affect to the every people, and also dancer who's the dancing the emotion and who is the singing the emotion. Both are help together. So today I'll perform one kind of small, if you permission, I go for the one demonstrate with the different rasa and different movement. And madam with help for me this part. One thing madam told me the Rodra, then I sing the Rodra rasa. What the Rodra rasa? And communication to the people, how I express myself. The Rodra rasa and the Singara rasa and the happiness in the Anandam, and so many things. Today I'll express of this. So ma'am, can I go for this? With music, yeah, without music? Whatever you want. Okay. With the I will perform the Rodra rasa. Is the Natesha Kautvam, the small part of Rodra rasa, and another rasa is happy. Is a part of, means every beat is a feel of the Anandam, happiness. So different rasa, how I affect for everybody mind to express ourselves is with dance and movement also. Now I will perform the Rodra rasa, Natisha Kautam. This is every speech on this dance. Dim, dim, tak, dimmi, dimmi, tat, dim, tak, ta, dim, ta, dim, tat, vana, muni, chana, sakala, sura. This is a part of Rodra rasa. And this is a different rasa. This is the Anandam. This Alokaye Sri Balakrishnam, Alokaye Sri Balakrishnam, Sakhi Nitya Balakrishnam. So these are two parts of different emotion. I will see the effect of the neurocognitive dance therapy. How is this part of our dance, and how is express the dancer. So
Madam, can I say the 1 minute or any minute duration for this? Sorry. 1 minute and 30 seconds. I just proved the different rasa Yes, about go the ahead, go ahead. dance. Okay. In the meantime, while Everybody is saying this. while Anuradha is getting ready, I would just like to say Yeah, one no, or two words. music. Rasa Music. actually means Yeah. experiencing a taste. So this comes from, like when you eat something bitter, you have the taste of bitterness. When you have something sweet, you have the taste of sweetness. So the various emotions, when we experience them, we have a feeling within us, which is the taste of happiness or taste of anger or taste of sorrow. In fact, there are 9 rasas, and here, through her dance, Anuradha will express certain ideas and you will taste the various emotions within you. Start, Anuradha. Didi, can you please unmute yourself? Anuradha, we can't hear you. We can't hear the music. Didi, can you unmute yourself? Maybe I will, this is Shaikat Basu. I think I will give her a call and tell her that she needs to unmute. She's possibly not listening to And that. yes, if you, and in the meantime, I will say a few words about Sure. You continue and I will just call her and tell her to please unmute her. Please help. It is said that the dancer expresses a bhava, like I'm smiling, or I'm crying, or I'm getting angry. And so each bhava, when communicated to the audience, creates a rasa within the audience. And we say rati bhava. Like when I'm showing something to do with romantic love, then it creates shringar rasa in the audience. Has bhava, something funny, creates hasya ras in the audience. There's laughter. Then shok bhava, when I'm sad, when I'm crying, then shok bhava creates karuna ras. Karun, when you're very sad, when you're sympathizing. Then krodh bhava, when I'm very angry, krodh bhava creates raudra ras in the audience. Bhay bhava, when I'm frightened, creates bhayanak ras. I mean, everybody is afraid too.
Then Jugupsa bhava, when something disgusting is being Now shown. I hope we are audible to Anuradha You're ji. audible? Can you hear me? Yes, hear me, sir. Okay. Anuradha ji, Yes. are you? Anuradha, are you ready? Yeah, So ready. Now, the before dance is based on Rodho Rasa. Yes. Rodho Rasa, and now the different Rasa, the so let Singara Rasa. do that, and then I will do the other. Get ready, Anuradha. Yes, yes. The before the dance, the based on Bharatanatyam, and this one is based on Kuchipudi dance. Kuchipudi dance form. The dance with plate. Hello. Yes. And I was speaking about the other bhavas. Jugupsa bhava gives rise to Vibhatsa ras, and then finally Vismay, when we are amazed. That gives rise to Adbhut ras. And madam, this all this rasa and all this rasa related to each of all those rasas, because without any rasa can't express yourself for the others rasa. Actually, yes, one rasa, one bhava blends into another. So actually, the audience experiences a number of rasas. Like when you're eating something, you find a part of it salty, a part of it sweet, a part of it bitter, a part of it sour, and everything put together is a wonderful feast. And so too, dance. I think, Anuradha, if you come closer to the camera and you show a few expressions, because when you're going far away, your expressions are not visible and people can't make out. Okay. Ma'am, you demonstrate the one rasa and then I express myself for this rasa actually. Yes, you just express the rasa because otherwise people can't follow when you're going at distance. Yes. First one. Sit down and just show the rasa. The first rasa. Show the bhava and the rasa. Yes. Sing, ma'am. Sing. Just demonstrate me Singara rasa. Then I express myself. This is the first rasa, Singara rasa. The Singara rasa. Next, Hashya. Next,
Karuna, compassion. Rudra, Bhayanaka, next, Santam, the last emotion, and we missing the one rasa, the Bibhatsha rasa. Bibhatsa. And this Adbhut rasa. Adbhut rasa. Adbhut. Thank you. Adbhut rasa. So when the audience actually joins with the dancer, then a mood is created, both in the dancer and in the audience. Like when you're seeing a very sad scene, then you also feel compassion. So I'm sure all of you have been feeling this all the while. Thank you, Anuradha. That was good. Thank you. Thank you so much, Elafu. Thank you. Thank you. Excellent, excellent, Anuradha ji, excellent. Great experience. Please do join. One tap dance day is also there in May. So, आप लोग कर्णधार बनिए. आप बताइए मुझे क्या करना है. ये प्लेटफॉर्म आपका है. Thank you. You've always been so kind. So nice of you. Now I would like to request Ms. Ramana Chattopadhyay ji. I hope you are complete now, Anuradha ji. Yes, sir. Yes. Thank you. Thank you so much. But please do join. Don't forget us by today, okay? You are my younger sister now in my group. Welcome, welcome. So now I would like to request Ms. Ramana Chattopadhyay. Welcome. My wife was also Chattopadhyay before marriage. Now she is writing Sharma. So welcome, welcome, Didi, welcome. Please unmute yourself. Yes. Namaskar. Good evening, everyone. I hope I am audible. Oh, yes, clear. Okay. Thank you so much. First of all, happy World Dance Day to all of you. Yes, I know the day was yesterday, but I really do believe that each and every day of our life is the day of dance, the day of rhythm, the day of emotional feelings beats. So it is better to say like each and every day is the day of dance. And so happy World Dance Day to all of you. And yes, we are celebrating this today. First of all, I would like to thank to my guru, Amita ma'am, for giving me this opportunity to talk about dance, to share my experiences. And I would also like to show my gratitude to her because she always encourages me to think differently. So today I am going to present these three words like world, dance, and day in a quite different way. And I hope that I will be able to present it properly because I think that these three words are connected with each other. The word world refers or defines the entire universe which is engaged to contribute to dance on each and every day. Now the question definitely comes like how? How is it possible? Here, I just want to share one of my childhood experiences. I was in school when first time my written article was published in a famous Bengali magazine.
And the title was Nacher Monche Alo. That means the light on the stage. Actually, it was all about my experience. I just wrote it down, submitted in, and fortunately, it was published. So one day when I was practicing in my practice room, very early in the morning, I could notice that sometimes the room was covering with the sunlight and sometimes it was not. Actually, that was obviously for cloud, nothing else. But truly speaking, that was very interesting to me because I could feel that I am performing on the stage and somewhere the light man is there, and he or she was controlling the light according to my moves. So that day, I could feel that I was not alone, even when I am practicing. The sun, one of the part of the universe, was also there. So, you know, I could feel that day, and still now I feel that the world, the dance, and the day, these words are together. These words are connected with each other. In fact, my guru always tells to me to follow the nature. Follow what? Like how the birds fly, how the rivers flow, how the flowers bloom, or even we can learn from tree also, like how its branches had spread out. Actually, from this, we can make different choreography. We can, do our movements better. Actually, according to me, dance is none other than those movements which we do regularly, like, doing our makeup in front of the mirror, or dressing up ourselves, or, talking with each other, sharing with something with each other. So, from this, we can learn. We can learn how to choreograph, how to make a movement, or how to compose a song or choreography. She also shares, many magical words of which Maharaj Jivan, where he also used to say that you have to feel something before presenting it. So if we don't notice anything properly, then we cannot do that. So we have to notice the elements of the nature, the creatures of the world, and also the human beings. In fact, I do believe that you, in fact, those who are not the dancers, they are also contributing to dance on each and every day. How? Because, you know, like the way you speak with others, or the way you express your pain, your happiness, from then, from that, we learn. We learn each and every moment. So for me, world, dance, and day are connected with each other. Now, I would like to recite few bowls of Kathak. The first one is on Jhaptal, 10 beats, and the name of the bowl is Srot Gatha. Actually, it is just like uh, the flows of a river. Like at the beginning, as we know that at the beginning, the river flows rapidly. And then, and when it comes on the plain land, the flows decrease. So here we can find the same thing in this bowl. I will recite it right now in Jhaptal. Dhi na, dhi na, ti na, ti na, dhi na, dhi na, ti na, ti na. Dha dha dha, kratade dha, gin ran dha, dhagin dhan katha, gina tete na tete kata, gadi gene dhan dha, gina tete na tete kata, gadi gene dhan dha. Gina tete na tete kata, gadi gene dha. So here we can notice that the bowl, at the beginning it was in high speed and then it is decreasing. Then I would also like to recite another bowl
which is on teen tal, Tist Jati ka bol hai, and we can find the syllables which is taken from the cricket, the sound of the crickets. Jhijikit. Okay. Dha din din dha, dha din din dha, na tin tin na, tit din din dha. As I said, this is the bowl of Tist Jati, like teen, like takite. So you can find the chand also. Dha din din dha, takite, tat ta, trage dan, jhijikite. So rang tak thuna kat, tik dha tik diktai, jhijikite. So rang tak thuna kat, tik dha tik diktai, jhijikite. So rang tak thuna kat, tik dha tik diktai. So dance is connected with the world. It comes from each and every element of the nature, creatures of the world, in fact, human beings also. It is not, dance is not, there is no difference between the world or dance or something or anything. So, I'd like to say one thing. Shravana, when you're reciting bowls, you recite a bowl on Makhan Chori, okay? Yes. Where the words are used as the dance syllables. So this is about Makhan Chori. Recite. Okay. That Krishna Sakha? Krishna Sakha. Okay. Dha din din dha, na tin tin na, tit din din dha. Krishna Sakha. Dha din din dha, na tin tin na, tit din din. कृष्ण सखा मिल गए ग्वालन घर, हिरत फिरत जब देख लियो, तब ग्वाल के कांधे चढ़ माखन उतार लियो और खाए लियो। दधकी मटकी झटकी पटकी और दूध कुफी बिखेर दियो। पकड़ लियो राधा ने जब तब ग्वाल सब भाग गयो, तब खाए लियो। देख नारायण ताल बजाए, नाचन लागे तग थे तथे तथे तकिट थे तथे 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 तता। I just thought that to get an idea about various types of bowls. So for disturbing you. No, it's my pleasure, ma'am. So, actually, I just want to say that the main thing is the World Dance and Day. Yes, the Happy World Dance Day it is, but these words are connected with each other. So, before ending my sharing, I just want to say once again a very happy World Dance Day to all of you who are knowingly or unknowingly contributing to dance on each and every day. Thank you so much. Thank you. Mesmerizing, madam. गुरु और शिष्याएं दोनों ही गजब। अति सुंदर। आज ये प्लेटफॉर्म धन्य है, आप लोगों की उपस्थिति के कारण आज ये प्लेटफॉर्म धन्य है। अग्निहोत्री सर। बहन सोमना जी, आपने तो गजब कर दिया। आप परफॉर्मेंस दे रही थी और मैं आपको नहीं देख रहा था, मैं मैडम अमिता जी को देख रहा था। उनके मनोभाव, ओ माय गॉड, क्या शिष्य परफॉर्म कर रहा है और गुरु पर क्या बीत रही है। इधर सिर ऊंचा, तो अपनी लियाकत देने, जो अपने परफॉर्मेंस, जो हमने आर्ट, जो हमने ज्ञान, जो हमने मेहनत की है, वो आज पर्सोनिफाई हो रही है। मैं आपके भाव देख रहा था, गजब भाई, वाह। इनका तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस में लिखा ही ये, इसीलिए आपने बीच में रास्ता बताया कि माखन चोरी का लाइन डालो, फिर और अच्छा खिल के आएगा सामने। व्हाट ए रियल मेंटर। और सोमना जी ने एक बढ़िया बात कही, मैं हिंदी भाषा में जरूर बोलूंगा। आपने कहा कि एवरी डे इज ए डे ऑफ डांस, यही कहा ना आपने, एवरी डे इज ए डे ऑफ डांस। और दूर जाने जरूरत नहीं है, नहीं, दूर जाने जरूरत नहीं है। हमारे महाकवि तुलसीदास जी क्या कह गए हैं, और जब वे अकेले बैठते थे ना, शंकर जी और पार्वती जी, तो बातें कर लेते थे आपस में। हवाला देते हुए शंकर जी कहते हैं, उमा दारु जोशित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई,
दारू माने वुड, लकड़ी, जोशित माने महिला, औरत, दारू नारी माने कठपुतली। शंकर जी कहते हैं, हे उमा, ये जो जितने भी मनुष्य है पृथ्वी पर, ये सब कठपुतली हैं। रामचंद्र जी जो गोसाई हैं, सबके लॉर्ड हैं, वो जिसको जैसे नचवाते वैसे नाचते हैं। वर्तमान में ये प्रक्रिया पत्नियों को प्राप्त है। वर्तमान में ये गुण पत्नियों को प्राप्त है, वो जैसे चाहते हैं वो घर वालों को नचा लेते। आपका बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद, ग्रेट, थैंक यू। मैं अब आगे के स्पीकर्स को आपको आमंत्रित करने को प्रार्थना करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जैसे देख पा रहा हूँ, अगर रेणु जी आपको थोड़ी सी असुविधा न हो तो मैडम हमारी नीलम भटनागर जी को पहले बुला लें आपसे, क्योंकि ना इसलिए कि वो थोड़ा शायद जल्दी अपना दिनचर्या पूरी करती हैं। नो प्रॉब्लम। अरे आप म्यूट है। बिल्कुल बुला लीजिए, कोई अरे दिक्कत नहीं। धन्यवाद भाई, बहुत धन्यवाद। मैं बड़े संकोच से कह, नमस्कार भाभी जी, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। मैं बहुत संकोच से कह रहा था कि भाई देखिए, आप तो हैं ही हैं, ये पहली बार जुड़ रही हैं, और मुझे बड़ा बहुत प्लेजर, आपको भी प्लेजर होगा इनकी एक्टिविटी देख के। और मैं इनका पहले तो बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और अपनी बहुत व्यस्ततम जीवन में से समय निकाला। आपका बहुत स्वागत है, और हमारी बिटिया का भी आभार है जिन्होंने आज ये मौका दिया दीप्ति ने कि वो आपको जोड़ सके। आपका स्वागत है। आपकी जैसी मर्जी हो, जो आपको सुविधाजनक कंफर्टेबल लगे वो प्लीज आप करिए। आपका स्वागत है। पवन जी, आप भी एक बार सबको नमस्कार। बस मैं यही कहना चाहूंगी, क्योंकि डांस मैंने सीखा नहीं है, स्पेशल डांस, क्योंकि मेरी दीदी आज वगैरह तो गुरु लोग बैठे हैं, आप चिंता नहीं करिए, आज आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप जो करती हैं, आपको गुरु लोग मतलब उम्र का नहीं, जो इस विधा में गुरु हैं, वो आपको आज आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। आज आपका प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस पर एग्जाम भी है और सर्टिफिकेशन ऑनर भी है, दोनों ही चीज है। जय हो, जय हो। नमस्कार। बस बोले, मैं यही कहना चाहूंगी, बचपन में मेरी छोटे से थे जब हम, दीदी वगैरह कथक सीखती थी, तो उनके साथ हम लोग जाते थे। उनको देख करके हम लोग थोड़ा बहुत आगे बढ़े हैं, और फिर उन्होंने अपना स्कूल शुरू करा, उनका स्कूल आगे हमने चलाया, और धीरे धीरे फिर हमने भी डांस देख करके लगा कि हाँ, डांस बहुत अच्छी मतलब एक्सरसाइज है शरीर के लिए, और सिखाते थे। उनका चला चलाया स्कूल दीदी का हमको मिल गया। फिर हमारे जो स्टूडेंट आते थे उनको हमारा सिखाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता था। बस ऐसे ही फिर हमने 20 साल मैंने स्कूल चलाया डांस का, और कोई बुखार तो नहीं आ जाएगा, ये अचानक ही सिखाते थे। शरीर के प्रॉब्लम के, बीमारी के कारण फिर वो बीच में हमारा रह गया स्कूल डांस का, और अपनी खुशी के लिए मैं डांस सिखाती थी। और थोड़ी सी मैं डांस की झलक दिखाना चाहूंगी आप लोगों को। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है प्लेटफॉर्म पर। जो ज्वाइन करा दो, लिंक से मांग रहा कोई। इस बीच आप समय ले रही हैं, मेरी बिटिया दीप्ति भी आपके साथ है। मैं चाहूंगा अगर समय निकलता है तो दीप्ति भी अपना थोड़ा सा परफॉर्मेंस दे सकती है। हम सॉरी, हमने उसको इस पर बैनर पर नाम और चित्र नहीं लगा पाए, क्योंकि हमारा अभी उनका परफॉर्मेंस चालू है सर। अच्छा, प्लीज देखिए। आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है, विदाउट म्यूजिक। साउंड नहीं है, साउंड नहीं। आ गया। हाँ, दीप्ति देख लेना उसकी। मैम साउंड नहीं है। साउंड तो कंप्लीट है। एनलार्ज कर सकते कि नहीं? नहीं आ रही साउंड।
पवन जी, हमने अभी भेजा है दोबारा से आपके व्हाट्सएप पर, देखिए उसमें साउंड मैंने यहाँ चला के देखा, आप उसको चला दीजिए अगर संभव हो तो। यार स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या? हो गया। मैंने अभी आपको दोबारा भेजा, वो देखिए अगर वो चल जाए तो। उसमें साउंड मैंने अभी यहाँ चला के देखा है। नहीं, साउंड तो इसमें भी आ रहा है, जैसे मैं चला रही हूँ तो मेरे पास तो आ रहा है साउंड। यहाँ नहीं आ रहा है, कोई कनेक्टिविटी फिर हमारे स्क्रीन से गैप है कहीं पर, देखिए एक बार। दोबारा लोड करें, मैं दोबारा से ट्राई करती हूँ। हाँ दोबारा से ट्राई करो, साउंड नहीं आ रहा। दूसरी डिवाइस से आप चाहे तो दिखा दिए अगर। हाँ जी, हाँ जी। सर चलाएंगे तो चल जाएगा निश्चित, उनको दोबारा भेजा हमने। अभी आप म्यूट पे हैं, आप म्यूट पे हैं। नहीं, अगर ये प्ले नहीं हो पा रहा तो आप डायरेक्ट कुछ परफॉर्म कर देते तो भी आज का दिन जो है वो जो है वो हाँ, कहीं कुछ सर लगे हुए हैं कोशिश में। मैंने दोबारा भेजा, यहाँ वो चल रहा है बाकायदा। नहीं, हमारे एंड पे भी चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं चल पा रहा। एक बार ऑफ करके फिर ऑन करिए तो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, यहाँ से नहीं आ रहा, मैंने तो अभी चलाया। और कोई दूसरा अगर आपके पास हो जो न लूट के हो डायरेक्ट वहां, उसको आप चला दीजिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारे पास आज भी चल रहा है, गैप नहीं होता है, कुछ ना कुछ करिए आप। तो आप अपने लेक्चर कंटिन्यू करिए अब तक, वो टाइम ले रहा है तो। आप इस विधा में और बताना चाहे वो कंटिन्यू रखिए। हाँ, बस मैं यही कहूंगी कि डांस मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है डांस करके। और मैंने वाईएमसी में सिखाया, 20 साल डांस सिखाया, मतलब सिखाया वहां पर। आवाज नहीं आ रही मेरी। अब आ जाएगा, दोबारा से लोड किया उन्होंने। यस, वो तो फॉरेन के चला देते हैं तो अपना ही है, चलेगा।
दीप्ति, 1.5 मिनट का है ना, कितना है? इतना ही है बस। ঠিক টাইমে এসে গেছে, কখন দেখবো যাও এখান থেকে, ভিডিওতে আছে। बस भाई साहब, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि डांस बस शौकिया सिखाती हूँ, और इससे ज्यादा इतने एक्सपर्ट बैठे हुए हैं सब लोग। मैं क्या बोलूं। नहीं, आप जुड़ी, आपका परफॉर्मेंस भी सामने आया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आइंदा भी आपके सब्जेक्ट का कोई विषय होगा तो दीप्ति हेल्प करेगी और आपको हो जाएगा। क्या दीप्ति कुछ देना चाहेंगे 1-1.5 मिनट में? कुछ गायन वादन कुछ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी फूफा जी इस चीज के लिए। अभी नेक्स्ट टाइम मैं पक्का से अपनी तरफ से कुछ दूंगी। अभी आज के लिए हम जो भी सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे, उनको देख के बड़ा मजा आ रहा है। मजा आया सबसे मिल करके। बहुत अच्छा। नमस्कार। चलिए, धन्यवाद आपका, जुड़े रहिए आइंदा भी। नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। हमारी नेक्स्ट परफॉर्मर मैडम रेणु दीक्षित जी को हम कानपुर से अपने मंच पर आमंत्रित करते हैं, इस विश्वास के साथ में अभी तक उन्होंने सबका ज्ञान सुन लिया है और उनका व्यक्तिगत भी, उनका वीडियो भी अपने पास है। प्रोफेसर पवन जी थोड़ा देख लिए कि वो टाइम से चल जाए और उसकी आवाज भी आए, और कुछ लक्षण नहीं चलेगा। आप म्यूट है। वो नहीं चल पा रहा है इधर से। अच्छा। चलिए, वो अपने एंड से करेंगे अगर तो। स्वागत है आपका मैडम रेणु दीक्षित जी, और चलिए आपका मंच पर स्वागत जी। नमस्कार जी। आवाज आ रही होगी शायद। सभी सम्मानित विद्वत जनों को नमस्कार। आज अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस की सभी को बधाई और शुभकामनाएं। अभी अनुराधा जी को और भी 1-2 सुंदर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत करने वाली जो नृत्यांगनाएं थी, उनके भावों को का प्रदर्शन जो नृत्य के माध्यम से उन्होंने किया, वो बहुत अद्भुत था, बहुत मन को भा रहा था। संगीत मेरा भी पैशन है, भजन, गजल, गीत सुनना और कभी समय मिलने पर प्रस्तुत भी करना, ये सब मेरी हॉबी है। बचपन में मैंने कथक सीखा भी था, तब राठ में थी, तो वहां पर कभी कभी स्कूल के टाइम में मंच की प्रस्तुति भी दिया करती थी बचपन में। टीवी पे नृत्य के जितने कार्यक्रम वगैरह आते हैं, मैं बहुत देखना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे संगीत से एक विशेष जुड़ाव है, और मेरा ऐसा मानना है कि जो संगीत के करीब जाता है वो खुद ब खुद ईश्वर के करीब पहुंच जाता है, आत्मा से जुड़ता है संगीत से जो व्यक्ति। तो नृत्य एक ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा है, बहुत कुछ तो नहीं। जैसे मैंने अभी देखा कि जैसे मैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हूँ, हिंदी के लिए तमाम काम करती रहती हूँ और काफी सालों से हिंदी में अपनी अभिव्यक्ति भी दे रही हूँ। तो उसी तरीके से नृत्य के प्रति जो लोग बिल्कुल आस्था से जुड़े हुए हैं और इसको अपना जीवन कर्म भी उन्होंने माना है, उनको मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पर इतना सिद्धि तो मुझे नहीं मिली है, लेकिन फिर भी कभी मन से जुड़ जाती हूँ संगीत से, नृत्य से। और इसीलिए हमें लगता है कि जो भिन्न भिन्न दशाओं में हमारी जो मनोदशा होती है, अपने मनोभावों को बहुत स्वाभाविक ढंग से जो एक माध्यम है वो है नृत्य। उसके माध्यम से हम अपने मनोभावों को प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले मुझे याद है कि मूक नृत्य हुआ करता था, तो उसमें ध्वनि तो नहीं होती थी, लेकिन फिर भी नृत्यांगना की जो मुखाकृति होती थी, उसके हाथों के माध्यम से, संकेतों से जो मनोभाव उसके होते थे, उसको पूरी व्याख्या मिल जाती थी। इसी तरह से प्रकृति भी जो है वो ध्वनि के माध्यम से नृत्य करती हुई दिखाई पड़ती है, अपने दुख सुख को, अपने आशा निराशा को, अपने उत्साह को प्रकट करती है। जब हम संस्कृत में कालिदास को पढ़ते हैं तो उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में भी कालिदास ने प्रकृति को नृत्य जैसा करता हुआ दिखाया है। और जब शकुंतला की विदाई होती है तो उस समय वहां पे शारीरिक रूप से कोई भी उपस्थित नहीं है। जब हमारे यहाँ आलता बहुत शुभ माना जाता है, तो आलता की वहां पे, क्योंकि वो कर्ण ऋषि के वन में वहां रह रही थी, जो जब उनकी विदाई होती है तो सारे वो शुभ संकेत प्रकृति के माध्यम से ही आते हैं। आलता के जो सुंदर पुष्प हैं वो शकुंतला के पैरों में लग जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो
प्रकृति के माध्यम से उनको ये सौगात भी मिल गई है। तो प्रकृति हर जगह नृत्य करती हुई दिखाई पड़ती है। केवल महसूस करने की बात है कि हम कितना उससे जुड़ते हैं, कितना उसका अनुभव कर पाते हैं। थोड़ी सी बात मैं संगीत के और नृत्य के अपनी तरफ से रखना चाहूंगी। मैं मानती हूँ कि नृत्य जो है वो एक सार्वभौम कला है, जिसका जन्म जब मानव ने जन्म लिया था उसके साथ ही नृत्य का जन्म भी हो गया था। और मानवीय व्यक्तियों का एक रसमय प्रदर्शन भी इसको कहा जा सकता है। 2000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में जब देवताओं की विनती पर ब्रह्मा जी ने नृत्य वेद तैयार किया था, जिसमें सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद से कई चीजों को इसमें शामिल किया गया। और आज जिस नृत्य दिवस की हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी शुरुआत 29 अप्रैल 1918 से हुई थी। और कहते हैं कि यूनेस्को के अंतरराष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की डांस कमेटी ने एक महान रिफॉर्मर जीन जार नावेर के जन्म की स्मृति में यह दिन अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाने के लिए रखा था। और नृत्य के संबंध में शास्त्रीय जानकारी हेतु जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें भरत मुनि का नाट्य शास्त्र आता है, जिसमें 37 अध्यायों में भरत मुनि ने रंगमंच, अभिनेता, अभिनय, नृत्य, गीत वाद्य और रस निष्पत्ति का आकलन किया है। कुछ जो मैंने सोचा है वो मैं बताना चाहूंगी कि नृत्य से कितने लाभ होते हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से व्यक्ति बहुत स्वस्थ रहता है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जब वो शारीरिक व्यायाम करते हैं तो संगीत लगा लेते हैं। तो नृत्य जो है वो एक व्यायाम है। और उसको और अगर हम कहें तो इससे हमारा जो रक्त संचार है वो बहुत दुरुस्त रहता है। उसके अलावा नृत्य से जो हमारा नर्वस सिस्टम है, कई बार लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं, उनकी मनोदशा अजीब सी हो जाती है। तो इस सब को स्वस्थ रखने के लिए, अपने भावों को स्वस्थ रखने के लिए, अपने में आत्मबल बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है नृत्य। फिर कहते हैं कि हम नृत्य से हमारा जो पाचन तंत्र है वो भी बहुत मजबूत रहता है। बढ़िया जब नृत्य करेंगे, मेहनत करेंगे तो भूख भी बहुत अच्छी लगेगी और हमारा शरीर है वो स्वस्थ होगा। और कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। तो पूर्ण स्वास्थ्य लाभ करके अच्छा जीवन जिया जा सकता है। हम देखते हैं सिनेमा में, चाहे माधुरी दीक्षित हो, रेखा जी हो, मालिनी हो, ये सब जो फिल्मी हस्तियां हैं, इतनी उम्रदराज होने के बावजूद जो इतनी छरेरे शरीर की दिखती हैं, इतनी सुंदर दिखती हैं, तो उसके पीछे जो महज एक कारण मुझे दिखाई पड़ता है वो ये है कि वो निरंतर नृत्य से जुड़ी हुई हैं। जब भी उनको समय मिलता है तो वो, और बहुत से लोगों ने तो नृत्य को अपना पैशन भी बनाया हुआ है। फिर इसी के आगे हम बात करते हैं कि नींद, कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अच्छी नींद अगर मिल जाती है तो वो पूरे जीवन स्वस्थ रह सकता है। 7 घंटे की नींद, 8 घंटे की नींद, और तो नींद का संबंध जो है वो अच्छे स्वास्थ्य से है। तो इसलिए नृत्य करने से शरीर थकेगा, शांति महसूस होगी, नींद बहुत अच्छी आएगी, जिसके लिए नींद एक ऐसी आवश्यकता है जीवन की, जिसके लिए लोग तमाम प्रकार की औषधियों का सहारा लेते हैं। बहुत चिंता करते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है। तो एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अगर हम जब भी हमें कभी समय मिले तो हम अगर नृत्य करें, एक शारीरिक व्यायाम भी होगा और हमें बहुत अच्छी नींद आएगी, जिससे हम पूरा जीवन हमारा स्वस्थ कटेगा। संगीत चाहे नृत्य हो, गीत हो, ध्वनि हो, सभी रूपों में उपयोगी होता है। ये क्या करता है? मन को शांत, उत्साही, आशावादी बनाता है। भजन सुनना, प्रभु की सेवा करना, अनेक मुद्राओं द्वारा भाव प्रकट करना, ये सब जीवन को बहुमूल्यता प्रदान करते हैं। और नृत्य द्वारा भगवान को रिझाना, प्रसन्न करना, अपनी मनोकामना पूर्ण करने का औचित्य भी नृत्य के माध्यम से उपयोगी सिद्ध हुआ है। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि जब भी समय मिले नृत्य अवश्य करें, क्योंकि नृत्य एक कला ही नहीं है, जीवन की औषधि है। और औषधि हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वो नृत्य के माध्यम से मिल जाती है तो इससे बड़ी कोई भी उपलब्धि जीवन में नहीं हो सकती। सभी को एक बार फिर से नमस्कार और धन्यवाद।
बार बार बुलाने के लिए भी पवन जी को और अग्निहोत्री जी को विशेष रूप से हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार जी। अब हमारे पास और एक और बच्चे ना सब, क्योंकि दूसरी वेबिनार शुरू करनी है। आज के हमारे आज के मेहमान जो हैं उनका सबकी प्रस्तुति आ गई है। मैं समझता हूँ शायद हमारी नीरू कौशिक जी नहीं जुड़ पा रही हैं, और दूसरी वेबिनार का समय भी हमने खा लिया है, कम से कम 20 मिनट 15 मिनट। तो हम समझते हैं कि हम अब आगे विलम्ब न करें। हम इस वेबिनार के सभी अपने आज के अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उन्होंने हमारे आज के वेबिनार के लिए स्थापित जो दिन था वर्ल्ड डांस डे, उसके बारे में बहुत ही बौद्धिक दिया, बहुत ही ज्ञानवर्धक दिया, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक दिया और बहुत ही प्रसन्नतादायक दिया। और लास्ट में हमारी रेणु जी ने तो इसका ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक और सैद्धांतिक शास्त्रीय